Bacillus thuringiensis, source of insect-resistant genes. Insects, they are also very important because they can also damage our crop, and there may be great economic loss per year. For example, if we consider one crop like the rice, then annual losses it may be 25%. That is quarter of the rice crop it may be destroyed by the insect attack. And in case of rice, the losses may be up to $50 billion कि 50 अरब डॉलर जो हैं वो नुकसान हो जाता है जो डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट्स जो हैं वो राइस के ऊपर अटैक करते हैं। तो इस तरह से राइस जो है वो हमारे भी कुछ इलाकों की जो अहम फसल है, तो उसके लिए भी जो इंसेक्ट अटैक है वो इकोनॉमिक लॉस का ज़रिया हो सकता है। इसके अलावा जो हम इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं या ऐसे केमिकल जो कि इंसेक्ट को किल करने के लिए यूज़ होते हैं, तो उसका जो 1.5 अरब डॉलर का जो एक्सपेंसेस हैं वो इसके अलावा हैं। सो even the use of insecticides, it is not going to protect the crops entirely, and the damages they are huge. And another aspect of the use of insecticide, as we have discussed number of times, that the environmental pollution is there. Our soil, water bodies, they may become contaminated if certain chemicals or insecticides may be used to kill insect pests. तो इसके अलावा जो है ये देखा गया है कि इंसेक्टिसाइड जो हैं वो नॉन सेलेक्टिव होते हैं। नॉन सेलेक्टिव का मतलब है कि वो बेनिफिशियल या हार्मलेस इंसेक्ट जो हैं उनको भी किल कर देते हैं। ऑल दो हार्मफुल जो इंसेक्ट है वो किल हो जाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो हार्मलेस हैं या बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं प्लांट्स के लिए उनकी भी साथ में डेथ हो सकती है। सो दीज आर सर्टन disadvantages, and an alternate strategy can be used where some genes that are related to toxin production, they can be expressed in plants so that insects can be controlled. So transgenic plants can be developed where the genes for certain toxins can be expressed, and as soon as the insects, if they will attack the crop, they may be died. So here one can quote the example of Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis, it belongs to the genus Bacillus, and it is a gram-positive bacteria. At certain stage of its development, that is at the time of sporulation, it can accumulate a crystalline protein which may be toxic for the insects. As soon as insects they will feed on the leaf, so such crystalline proteins they may be dissolved under the alkaline conditions of the intestine of the insects, so that the epithelial lining it may be damaged. That may cause the ultimate death of the insect. So this is the mechanism by which the insects can be controlled by using the toxin that is produced by the Bacillus thuringiensis, and it is commonly called as the BT, Bacillus thuringiensis, and its toxic genes against the insect they can be cloned and expressed in transgenic plants. In early 1930s, the strategy was to spray the plants with the toxin of such microbes कि बीटी टॉक्सिन लेके फसलों पे स्प्रे किया जाता था, बट इट इज़ हैविंग डिसएडवांटेज। तो इसका डिसएडवांटेज ये था कि ये जो टॉक्सिन है, बीटी टॉक्सिन या ये जो प्रोटीन्स हैं, ये डे लाइट में स्टेबल नहीं थी, ये डैमेज हो जाती थी, तो इंसेक्ट को अच्छे तरीके से कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। तो इसके लिए ज़रूरी था कि कोई ऐसे मैकेनिज़्म हो जिससे जो बैक्टीरियल जीन हैं या बीटी जीन्स हैं इनको क्रॉप्स के अंदर ही एक्सप्रेस करवाया जाए और उनके अंदर ही टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हो जाएं। सो
Here, the gene manipulation technique was used to express or to clone the genes related to Bt toxins so that when insect may attack, so it can cause the death of the insects. So by using gene manipulation strategy, different type of Bt crops now they are commercially available, like tomato, maize, and the most important one, it is the Bt cotton.